So once again, very, very good evening to you all. Today we will discuss the paper 2 UG Senate Mass Communication Journalism. The MCQs, we will discuss the important questions. All the questions are from the previous year questions, but we'll understand the concepts and we'll revise here also. Okay. So we'll start from the question that is identify the right sequence of the first in language newspaper published, because many of the newspapers questions is asked in the UG Senate and you have to understand because these questions are repeated many times. So you have to answer the questions. Everyone will answer. Identify the right sequence of the first Indian language newspaper published. Everyone. Yes, absolutely. Absolutely correct answer. That is Digdarshan. Digdarshan, Samachar Darpan, then Sambad Kaumudi, then Utkal Deepika. Okay, okay. So Utkal Deepika is the first Odia newspaper. Sambad Kaumudi is the newspaper which is published by the Raja Ram Mohan Rai. Samachar Darpan. This the only the differences between the Digdarshan and Samachar Darpan is all of the years, right? So Digdarshan it is in April 1818. ध्यान रखेंगे April 1818 and this Samachar Darpan is in May 1818. Okay. So always Digdarshan is the first from the Samachar Darpan. Okay. So remember this thing. It's very, very important. Chale, taxonomy of the news values is written by. Taxonomy of the news values is written by. Everyone, do not make mistake. That right answer of the question is that Galtung and Drews is the correct answer. This is the right answer. Chaliye. We have discussed this question, so we'll not waste much time. When a camera fans pass to a visuals blur, the steadies into the correct focus into a particular point, it is called. Everyone. जल्दी से बताएंगे what the right answer. When a camera pans fast to a visual blur, then it is considered a. Only 2, 3, 4 answers. Okay. So right answer of the question is here, that is whip pan. Okay. So always understand जब इस तरीके की images आपको click होती है, that it is in the focus and rest are in the blur, that is what called whip pan. इसको हम Swiss pan भी बोलते हैं. Next, journalism that depends upon the computer assisted analysis of existing information is known as. यहाँ पर assist कौन कर रहा है? Computer. And that journalism which is highly dependent upon the computer assisted analysis for the existing information is called. Yes, इसी को कहते हैं हम database journalism. ध्यान रखेंगे. चलिए next. Ballooning is a cartoon that contains what? It's a terminology of the newspaper, which is basically a cartoons that contains what? Yes. So these are basically the balloons. ये सारे क्या हैं? Balloons है, which is a text. Okay. So right answer it is a text. Next, curtain raiser is a part of a or an. Everyone, curtain raiser. Curtain raisers is a part of a or an. Everyone answer. जल्दी से आंसर देंगे. So right answer here it is interpretative journalism. ठीक है. Curtain raiser is a part of an interpretative journalism. We have given you that what is likely to happen, not a report on what has happened. Okay. So it's a story on what is likely to happen. क्या होने वाला है उसकी खबर को हम ज्यादा वैल्यू देते हैं, बल्कि ये नहीं कि क्या हुआ है. Right. That is what the curtain raiser which gives the views to discuss on that particular matter. Okay. चलिए, lobbying is an activity of. Everyone, lobbying is an activity of. Lobbying is an activity of. Yes, the right answer of the question is here. That is C. Public relationist, right? So lobbying is an attempt of by the individuals or the private interest group that to influence the decision of the government, right? So it's very important and it's a tool. It's the activity of the public relations generally. In the field of public relations, this tool is applied. Okay. Next, identify the correct sequence of the phases of the communication process. कम्युनिकेशन प्रोसेस के फेजेस को सीक्वेंस में करना है, जल्दी से बताएंगे.
Yes, it's good. So right answer of the question here it is. It's not the BCB, it's here the D. Okay. The transmission of the cognitive data. ध्यान रखेंगे cognitive data that is inside your brain. जो आप करने वाले हो, जो आप सोचने वाले हो, वो सारा सोचा हुआ डेटा जो ट्रांसमिशन चल रहा है आपके ब्रेन से, फिर जो आप मैसेज कन्वे करते हो, दैट इज व्हाट द ट्रांसमिशन ऑफ द कॉग्निटिव डेटा विच इज गोइंग इनसाइड योर ब्रेन। ओके, जो आप सोच रहे हो, जो आइडिया पे काम कर रहे हो, ठीक है, जो प्रोसेस अंदर हो रहा है, जो लैंग्वेज का जो प्रोसेस हो रहा है, जो आप लिखने वाले हो, जो आप बोलने वाले हो, वो सारे कॉग्निटिव डेटास हैं। दैट विल बी द फर्स्ट। Level of acceptance, always it will be the last. Okay, how you have decided the B1? ठीक है, always understand the acceptance is the last one before it is the, it's about the understanding and that receptions, right? पहले आपको सुनाई देगा, ठीक है, रिसीव होगा, देन आप उसको समझेंगे, फिर उसे आप फीडबैक के रूप में या फिर उसे एक्सेप्ट करेंगे, राइट? दैट इज व्हाट इट्स अबाउट। इट्स क्लियर टू एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर व्हाइल वे आर लॉन्च ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट। फ्रीडम मूवमेंट के दौरान जितनी न्यूज़पेपर लॉन्च हुए हैं उसके ईयर्स के रेस्पेक्ट में आपको सीक्वेंस में रखना है एवरीवन। अगेन यहां दिग्दर्शन वाली बात आ गई, ठीक है, सो ध्यान रखेंगे। यस, ये दो रिपीट है, ये दो हमेशा ध्यान रखेंगे, ये रिपीट है। दिग्दर्शन, समाचार दर्पण, दिग्दर्शन विल बी द फर्स्ट, देन समाचार दर्पण फॉलोड। ओके, then after it is संवाद कौमुदी and then later that is बंगदूत। okay, so दिग्दर्शन again that is in the April 1818, समाचार दर्पण is in May 1818, संवाद कौमुदी is in 1821 and बंगदूत this is in 1829। okay, so always remember। next, identify the correct order of the international radio station that were launched। इंटरनेशनल रेडियो स्टेशन है ये सारे, जिसको आपको सीक्वेंस में जमाना है एवरीवन। चलिए राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन हेयर इट इज बीबीसी से स्टार्ट होता है, क्योंकि सारे में बीबीसी दिया हुआ है, तो बीबीसी इज द फर्स्ट वन विच यू नो वेरी वेल, दैट इज बाय द जॉन रीड, इट इज इन 1922, राइट? देन इट्स स्टार्ट with the radio Moscow, right? You can find it in the explanations, these things been written, Voice of America, BBC and United Nations Radio when it was created. Although I'm writing it here so that it will be easy to note it down, the Radio Moscow which is in 1929, right? I'm writing with this, okay, this line. The Voice of America which is in 1942. The United Nations Radio, this is in 1946. Okay, so remember BBC, then Radio Moscow, then Voice of America and then United Nations Radio. Okay, nothing has been asked to you, only the years related questions are there. Okay, there is no concept about the this all the international radio stations has been asked to you. There is no deep questions, only the years related questions, so please remember these questions, it's very very important, right? Chaliye, identify the correct order of the distinct zones in the relation to the body language। body language के relation के context में that you have to answer everyone। order, what is the correct order here? सिर्फ आपको फर्स्ट एंड लास्ट भी अगर आप देख लेते हैं तो इससे भी काम चल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कौन सा राइट आंसर है, ठीक है? यस, इंटीमेट जोन इज द वेरी मच क्लोजेस्ट वन, जो आपके सबसे ज्यादा क्लोज हैं, राइट? दैट मे बी द मदर विच इज यू आर वेरी मच इमोशनली क्लोज टू यू, दैट आर अलाउड टू एंटर इन योर इंटीमेट जोन। ओके, personal zone, personal zone that is basically the distance you, if you would read it here it will be given to you, just read it and you would get answered, that the last one which is the public zone, the range are given here। क्या इंटीमेट जोन का रेंज होता है सारे से एक्सप्लेनेशन में दी हुई है, यू कैन फाइंड इट। सो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर, दैट इज इंटीमेट जोन, देन पर्सनल जोन, देन सोशल जोन, देन पब्लिक जोन। ओके, इज क्लियर टू एवरीवन?
चलिए, now if a newspaper is of the 600 into the 380 mm, it is known as of. कौन सी साइज के न्यूज़पेपर्स या फॉर्मेट हो सकता है एवरीवन? दिस क्वेश्चन इज विद द format of the newspapers. What the size of this newspaper called? The right answer of the question is here, that is broadsheet size. Okay, always remember broadsheets का size जो होता है mm में, ध्यान रखेंगे ये mm है. mm में 600 mm into 380 mm is the size of the broadsheet newspaper. If you go with the inches, that is 23.5 inches multiplied by 15 inches is called the broadsheet size in the form of, in the unit of inches. Okay, please note it down. Tabloid का यहाँ पे लिखा हुआ है mm में भी और inches में. You can note it down about the tabloid size newspapers because this is also a popular format, right? So you have to note it down. चलिए आगे बढ़ते हैं. Another name for the filler copy is, filler copy का दूसरा नाम क्या है? ये न्यूज़पेपर से क्वेश्चन है, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन से. You have to answer that another name for the filler copy is. Everyone answer please. This is the very important questions from the terminologies. Yes, so correct one is here the time copy. जब न्यूज़पेपर्स के पास राइट द टाइम बहुत कम हो और न्यूज़ प्रिंट होने जा रही हो और ब्लैंक स्पेसेस जा रहा हो, उस समय फिलर ही ध्यान में होता है. दैट इज द ब्लैंक स्पेसेस इन द न्यूज़पेपर्स which are used to fill with the quotations, articles, crossword puzzles, recipes, unusual facts, cartoons, etc. and etc. Okay, it is known as a time copy because at the time of the deadline of the publication, fillers are used to fill the blank spaces. Okay, it's clear. चलिए, ओके फाइन. नाउ एम्बेडेड जर्नलिज्म इज कंसीडर्ड एज अ टाइप ऑफ. ध्यान रखेंगे एम्बेडेड जर्नलिज्म. एम्बेडेड जर्नलिज्म किस चीज से एसोसिएटेड है? दैट इज कंसीडर्ड एज अ टाइप ऑफ. एवरीवन आंसर. ध्यान रखें एक ही वर्ड है जो आपको आंसर दे सकता है, दैट इज मिलिट्री ऑफेंसिव. ओके, सो एम्बेडेड जर्नलिज्म refers to the news reports being attached to the military units that involved in the armed conflicts. Okay, so please remember this question, it's very very important to you, that on the type of journalism. ठीक है, टाइप ऑफ जर्नलिज्म से वीडियोस बनी हुई है, प्लीज उसे जरूर देख लें. सारे टाइप की जर्नलिज्म उसमें बताई गई है, राइट फ्रॉम द प्रिसीजन जर्नलिज्म, जैज जर्नलिज्म, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, ईच एंड एवरी काइंड ऑफ द जर्नलिज्म हैज बीन make you understood in that particular videos. Okay, you can find it on the channel. Now magazines have well defined formats to reach out to. Magazines have well defined formats to reach out to. Everyone answer. It's a very important questions which we are discussing. All those questions are from the PYQs only. You can find it the level of the questions, how the questions are asked. Okay, चलिए, डी इज द करेक्ट आंसर. मैगजीन्स में ज्यादातर जो होता है वो नीश ऑडियंस होते हैं, सेलेक्टेड ऑडियंस होते हैं, टारगेटेड ऑडियंस होते हैं. ठीक है, दैट इज यू नो वेल वेरी मच. बहुत सारे मैगजीन्स, द फैशन बेस्ड मैगजीन, टेक्नोलॉजी बेस्ड मैगजीन्स, वुमेन बेस्ड मैगजीन्स, किड बेस्ड मैगजीन्स. सो ये क्या है, किड, वुमेन, दैट, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडियंस के बेस पे मैगजीन्स का जो फॉर्मेट्स डिसाइड्स है, दैट इज बेसिकली अ सिलेक्टेड ऑडियंस, राइट. चलिए, नेक्स्ट, द फैक्टर ऑफ डैश हैज कंट्रीब्यूटेड द इमर्जेंस ऑफ द स्पेशलाइज्ड मीडिया ऑडियंस. एवरीवन, which factor has contributed for the emergence of a specialized media audience? Specialized media, ध्यान रखेंगे, emergence of a specialized media audience, that which factor has contributed? That right answer here, it is the personal mobility, right? C1 is the correct one. Personal mobility. That mobility you know very well and familiar with it, which is given in the explanation as well. You can read it here. That mobility is the ability to move freely, right?
जब एक जगह से दूसरे जगह आप जो जा सकते हो, दैट इज व्हाट इट कॉल्ड मोबिलिटी। और मोबाइल जो है उसी का एग्जाम्पल है, दैट मोबाइल कंप्यूटिंग वेयर द यूजर्स एंड डिवाइसेस both have to move on the different geographical locations on different networks. Okay, आप कहीं से भी मोबाइल को एक्सेस करें, with devices also moving and the users are also moving and on different geographical locations. And this personal mobility approach has given or contributed to the emergence of a specialized media audience, right? That is the personal mobility. Okay, is clear? And that what the specialized media audiences are, the Instagram, that mainly it is the reach to the young people, right? Who is looking more of the entertainment zone. Twitter, or you can say X, which is the mainly used for the politics, okay, the trend, the news, the current affairs. The third, that is the Facebook, which is for the general people. Our the parents are also on the Facebooks. Wow. So LinkedIn, that for the business people, that for the educated people, right? So they are targeting the education's career, uh, this kind of the audiences. So specialized media audiences are there, which has been immersed with the personal mobilities. That is the mobile computing. It's been clear to everyone. Clearly. Next, in the semiotics, smoke is considered as semiotics में यानी the language of the sign and the symbols is called semiotics, where you have to tell the smoke is considered as. Which type of the communications here describe the smoke in the semiotics? Okay, so you have to know and familiar with it. This the semiotics, as we said, this is the study of the sign and symbol. और इस साइन और सिंबल में आपको बताना है स्मोक इज व्हाट काइंड ऑफ द कम्युनिकेशन इज. ओके, सो you have to read these explanations where you will find the different type of the communication or the signs. As here the indexical signs are there, right? The correct one is indexical signs. So what is the indexical communications? Just read it here. The signs where the signifier is caused by the signified, right? एक दो चीजें होती है इसमें. एक होता है that is sign, which is the basically signifier is caused by the signified. So smoke is signifying the fire. यानी धुआं तभी उठेगा जब आग लगी हो, राइट? धुआं तभी उठेगा जब आग लगी हो. सो स्मोक इज सिग्निफाइंग द फायर. ठीक है, स्मोक इज सिग्निफाइंग द फायर. Okay, so what is it here? That in the semiotics, while categorizing of the signs in the three different types, that is an icon, that is an index, that is a symbol. So तीन चीजें हैं इसमें, where an index is associated with the referent, whereas a smoke is a sign of fire. Okay, so it is a indexial communications, which is ये एक साइन है जो एक स्मोक है साइन. और इससे आपको क्या पता चलती है कि कहीं पे आग लगी है? तो दिस इज अ साइन विच गिवन यू अ हिंट टू नो अबाउट द फायर, वेयर द फायर. ठीक है, सो बेसिकली दिस इज कॉल्ड इंडेक्सियल कम्युनिकेशन. ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? विच इज इंडेक्सिंग है और विच इज बेसिकली एज एन रेफरेंस इट इज बीइंग एसोसिएटेड. ओके, इज क्लियर? चलिए, सो ध्यान रखेंगे. Any example could be given here, not only the smoke, and any example which is becoming as a referent, जो एक reference बन रहा है किसी चीज का, that is what about the indexial communication. Okay, or also one of the important thing it is here in these questions that they generally ask you, which is here I am highlighting all. The Swiss linguist Ferdinand de Saussure has defined this, the semiotics. Okay, it is very important. You have to know this.
thinker's personality, that is Ferdinand de Saussure. Okay. Noted everyone, Ferdinand de Saussure, that the founder of this, the study of the sign which is called semiotics. Next, in the communication plays the result from a particular relationship between the meanings and communication में प्लेजर जो है that results from a particular relationship between meanings and yes. So correct answer of the question is absolutely right. That is the power, right? The right answer is here the power of the such science that very much like the language. Languages have the power, right? They shape some aspects of our perception of a given topic. लैंग्वेज के पास इतना पावर है दैट इट गिव्स यू द डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हाउ यू आर स्पीकिंग. अगर मैं उसी भाषा को मैं हाई टोन में बोलूं, ठीक है, दैट बेसिकली व्हाट इट विल गिव द एंग्री टोन. उसी को मैं धीमी आवाज में बोलूं उसी भाषा को, तो दैट विल बी गिव अ काम. ओके. So different interpretations could be done from this language, and which is having the power give you the different perspective. Okay, so this is having a power which gives the pleasure results from the particular relationship between the meanings and the power. Okay, in which also you have to understood when it's come to talk about the pleasure in the communications, you should know about the utilitarianism, which will be a shortly a short YouTube shorts videos बनेगा इस पे. और मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपके यूटिलिटेरिज्म और कई सारे छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको विजुअल से क्लियर करेंगे. राइट. ध्यान बस इतना रखना है कि यूटिलिटेरिज्म इज बेसिकली अ थ्योरी ऑफ morality that advocates action and the foster happiness or the pleasure that oppose the action that cause the unhappiness or harm. किस चीज से खुशी मिलती है किस चीज से नहीं मिलती है. राइट. that basically is advocating here the kind of actions, okay, in our as an ethical approaches. Okay, so that is what it called the moralities which advocating the actions about the happiness or unhappiness. Okay, so this concepts about the utilitarianism is given by the Jeremy Bentham. Okay, ध्यान रखेंगे two of the concepts are very important about the semiotics and utilitarianism. Okay, utilitarianism concepts given by the Jeremy Bentham and this semiotics by the Ferdinand de Saussure. In the Ferdinand de Saussure, the three things are there which we had studied in the previous questions that you have to remember, that is eigen index and other one which was. So all these things you have to note it down parallelly in your notebooks because when you skip it will be forget. Okay, so please ध्यान में रखेंगे इस सारी चीजें नोट डाउन करते हुए चलेंगे. whatever the questions are being discussed here in the class, you have to note it down each and every points which I try to highlight. Okay, next, when signs are organized into the systems they will become. When signs are organized into the systems they will become. Yes, they will become the codes. A sign system is a key concept in the semiotics that used to refer to any system or the signs and relations between the sign, right? So this is what it here the organized into the codes in the two ways, which is the paradigms and the syntagrams. और ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है एक बार ट्राई कीजिएगा समझने के लिए एक्सप्लेनेशन से. इफ इट इज नॉट क्लियर what the difference between the paradigms and this syntagrams, then will make you clear in the upcoming sessions, right? Not now, right? Because you have to focus with your self studies what the difference between this. Okay, so just read the explanations, explore on the Google, learn from the videos, understand it, and if still it is not clear, just tell me in the upcoming sessions, will make you clear. Okay, because some kind of the assignments is to be given through the self study. Okay,
It's been clear to everyone that the signs are organized into the system, they will become the codes. Okay, fine. Now, in a postmodern society, the culture is postmodern society में culture है. Yes. So correct answer everyone is giving. That right answer is commodified, right? Postmodern society has been characterized by the activities, events, perspective that emphasizing the particular over the global or fragmented over the whole, right? So that is what the postmodern societies that we are living in the age of digital eras where the each and everything is being emphasized by the basically the you can say as an commodified प्रोडक्ट सो commodified का मतलब है कि हर चीज का प्रोडक्ट बना देना ठीक है प्रोडक्ट मतलब उसको सेलिंग पर्पस के मोटिव से देखना even our culture has been commodified right so which is by what it being discussed here that intangible culture heritage is frequently used in the commercial sector how you can see that is for an example the culture of a nation that it revolves around the services like the fast food products such as the car expensive such as a theme park हम अपने इंडियन कल्चर सिविलाइजेशंस को बोलते जा रहे हैं एंड वी आर स्टार्टेड adopted the western cultures right so we are selling in the name of the Indian culture and also adapting the western culture okay so this is what it's about the postmodern society where each and everything is being commodified even the culture is being sold okay. Next, no new information is available in dynamic, internal, fatigue, or conflict. No new information is available. Everyone answer, please. जल्दी से आंसर देंगे. Yes. So right answer here it is fatigue communication. Fatigue communication में basically होता क्या है कि ये ग्रीटिंग के लिए यूज होता है फैटिक कम्युनिकेशन जब आप किसी से मिलते हो पहली बार या रोज आप हर दिन मिलते हो तो यू से एज एन हेलो हाय राम राम राइट बढ़िया कैसे हो ये सारे जनरल क्वेश्चंस होते हैं विच यू ग्रीट समबडी ओके दैट इज गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून सो दिस इज व्हाट इट कॉल द कम्युनिकेशन विच यू एक्सप्रेस to establish or maintain the social relationship rather than to impart the information there is no बेसिकली कि आपके पास कुछ ऐसा नहीं होता है कि उनसे बात ही करना है बस ऐसे ही कम्युनिकेट करते हो जस्ट कि हेलो हाय हो जाए दैट इज व्हाट इट कॉल द फैटिक कम्युनिकेशन सो देयर इज नो सच न्यू इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन दैट एंड दैट इज व्हाट इट कॉल्ड फैटिक कम्युनिकेशन सो इट्स बीन क्लियर टू एवरीवन चलिए ऑल राइट नाउ रिडंडेंसी हेल्प्स इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स आर एसोसिएटेड विद एवरीवन आंसर द क्वेश्चन redundancy helps in solving the problems associated with everyone answer redundancy and
So yeah. So redundancy helps in solving the problems associated with. What is the correct answer? You all have answered. Wow, very good. So C is the correct one. That is the audience. So what is the redundancy? Redundancy is the repetition of the elements within a message that prevents the failure of the communication of the informations. So दोनों में फर्क है, redundancy और entropy में ध्यान रखिएगा, दोनों important है. The both the concepts are very very important and many of the times the question has been asked related to it. Okay, so it helps in associated with the basically the audience. What it is, रिडंडेंसी में वहां होता है जहां पे हायर प्रिडिक्टेबिलिटी होती है, हायर प्रिडिक्टेबिलिटी. और एंट्रोपी वो होता है जहां पे हायर अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है. ओके, हायर अनप्रिडिक्टेबिलिटी. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू. यस, विल्बर सैम के दोनों कंसेप्ट है ना सर? यस, द कंसेप्ट बेसिकली द रिडंडेंसी एंड ये दोनों चीजें विल्बर सैम ने दी है. आई हैव टू गो फॉर इट. बेसिकली आई वुड नॉट make you clear about it. So we have to check, right? I have to check. So अगर आप कंफर्म है तो बिल्कुल आप सही होंगे, लेकिन आई विल कंफर्म एंड विल डिस्कस यू इन द क्लास, राइट? चलिए. सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द इंट्रोपी एंड रिडंडेंसीज. दोनों में आप फर्क देखेंगे यहाँ पे, रिडंडेंसी एंड इंट्रोपी. इंट्रोपी इज रेफरिंग हियर द मैसेज व्हिच कन्वे द हाई अनप्रेडिक्टेबल इंफॉर्मेशंस. जैसे मान लीजिए दो फ्रेंड है, टू फ्रेंड्स आर देयर. अगर मैंने फ्रेंड बोल दिया, इसका मतलब क्या है कि यू नो वेरी वेल एंड यू आर वेरी मच क्लोजर टू हिम और हर, एंड व्हाट यू स्पीक ही और शी अंडरस्टैंड वेल. एंड वो पहले ही बता देगी कि आप क्या बोलने वाले हो, क्या नहीं बोलने वाले हो, क्या समझोगे नहीं समझोगे. दैट इज व्हाट बेसिकली देयर इज एन हायर प्रेडिक्टेबिलिटी इन द कम्युनिकेशंस बिटवीन देम, एंड दैट इज व्हाट कॉल्ड द रिडंडेंसीज, राइट? दे नो बिफोर यू स्पीक कि आप क्या बोलने वाले हो, दे नो वेरी वेल. सो दैट इज व्हाट इट कॉल हायर प्रेडिक्टेबिलिटी. एंट्रोपी वहां होती है जो दो स्ट्रेंजर जहां पे मिलते हैं, दे बोथ आर स्ट्रेंजर्स, दे डू नॉट नो ईच अदर्स, दे डू नॉट नो इवन कि कहां से वो है. And when you will speak, they might be they do not understand your language, right? So that is the higher unpredictability in the communications. That is what it called entropy. Is clear to everyone? It is not in the communication itself only. You can take the several examples when you go into the shop. जब आप शॉप पे जाते हो, जब आप किसी दुकान में जाते हो और आपको कुछ ऐसा शॉकिंग चीजें या फिर कुछ ऐसी चीजें देखने को मिल जाती है, when you have never heard or never seen that product basically in the market, entire market और entire life में कभी आपने ऐसे स्लीपर्स नहीं देखे, कभी ऐसे कुछ कपड़े नहीं देखे जो आपको बेसिकली आपने वहां पे कुछ नए प्रोडक्ट्स के रूप में देखा. दैट इज व्हाट इट कॉल्ड द हायर अनप्रिडिक्टेबिलिटी इज कॉल्ड एंट्रोपी देयर, राइट? सो दिस इज व्हाट इट कॉल्ड लाइक व्हेन यू विल गो. एक बहुत अच्छा एग्जांपल था, मैंने पढ़ा था, उसको मैं आपको जिक्र कर देता हूं ताकि आपको ध्यान में रहे हमेशा. वेन यू गो टू बाई स्लीपर, जब आप एक स्लीपर लेने जाते हो तो स्लीपर जो लेफ्ट पैर का जो आपका स्लीपर जो होगा, वही स्लीपर सेम डिजाइन, द सेम डिजाइन विल ऑल्सो बी इन द राइट स्लीपर. ठीक है, जो दाहिने पैर का भी वही स्लीपर होगा. यू नो वेरी वेल, बहुत ही अच्छे से आप अवेयर हो कि दोनों पैरों का सेम डिजाइन का स्लीपर होगा. वो क्या है, यू नो वेरी वेल, यू आर अवेयर कि जो राइट का डिजाइन है वही लेफ्ट का भी डिजाइन होगा. So this is called the redundancy, which is the higher predictability in the communications are. But एक दुकानदार ने एक स्लीपर, लेफ्ट स्लीपर जो है वो अलग दिखाया और राइट का दूसरा स्लीपर दिखाया. So that is the higher unpredictability, which is the entropy there. Is clear to you? चलिए, okay, all right. The last question here. The Vivendi Universal is a well-known media organization of. Vivendi Universal is a well-known media organization of. Yes. So right answer here it is the France. So फ्रांस जो है फ्रांस में ये विवेंद्र यूनिवर्सल का बेसिकली हेडक्वार्टर्स पेरिस में है.
और इट इज वाइडली नोन एज इन द ऑनर ऑफ द गेम लॉफ्ट, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज का इन्हें बनाते हैं, दैट हैज एन एक्टिविटीज इन द टेलीविजन, फिल्म, वीडियो गेम, बुक पब्लिशिंग, प्रिंट प्रेस, कम्युनिकेशन, टिकट्स, वीडियो होस्टिंग, सब चीजें दुकान है. So that is what it is about. The founder of this company is Napoleon Third. Okay, so this is what it is very important about this organization. So you have to note it down each and everything. So, okay, it's clear to you, everyone. Any questions from this sessions is there, then you can ask it. Everyone, कोई questions, कोई doubts, कोई issues, कोई suggestions, कुछ anything? सी एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो गए हैं, प्लीज ध्यान में रखेंगे, फॉर्म भर देंगे, स्टार्टिंग फेज में ही फॉर्म भर दें, सो दैट कोई दिमाग में ये ना जाए, छूट ना जाए, रह ना जाए. सो जो भी चीज़ें हैं डॉक्यूमेंट्स पूरा करके, डॉक्यूमेंट्स तो रिक्वायरमेंट नहीं होता, लेकिन प्लीज़ आप डॉक्यूमेंट्स को पूरा, ओबीसी में भर रहे हैं तो आप प्रॉपर भरें. ठीक है, आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स हो. अगर आपने जनरल कैटेगरीज में भर रहे हैं तो प्लीज़ आप उसे देख कर भरें. ठीक है, सो कैटेगरीज ध्यान रखें, नाम ध्यान रखें, आधार कार्ड वगैरह ध्यान रखें. चलिए, सो थैंक यू टू ऑल, थैंक यू सो मच, विल मीट इन द अपकमिंग सेशन जस्ट आफ्टर द 5 to 10 minutes, just after the 10 minutes we'll start from the 8:40. Okay, चलिए, सो थैंक यू टू, थैंक यू सो मच. ओके.